clearly? Okay, great. Thanks for confirmation. I hope you guys all joined on the Sensex expiry as well and made a huge profit out of the session because we roughly captured around 80 to 100 points in that session. How many of you joined the Sensex expiry last time, guys? I'm really sorry for my voice. I'm a bit sick today. We had no BTST in the last session, guys. No BTST was initiated. We'll be starting the session. This is the first morning session of the week. Shambhu sir will be joining us soon in next minute or so. Vinayji is asking for intraday. Definitely, we will be sharing the intraday. Let's just wait few minutes and then we are good to go. Just give me a second. I'll check in with our expert. I can see people are asking questions. Good morning, everyone. We are just waiting for our expert to join in and then we are good to go. I can see more people are joining in. I'm just checking in with our expert, guys, so that there is no delay. Good morning, everyone. Good morning. Meanwhile, you can drop your questions. We will take it up as soon as sir is here. And also, it's a request to please ask detailed question: which stock, which price, how many quantity you have, how many shares you have, and for what duration you are asking. Nifty trade, Tapaz, the Nifty trade will not be initiated in this session. हमारा जो main focus है that is in the stocks and equity. So you can ask any questions related to stock. Although जो हमारा afternoon session है Bankex का, in that we'll be focusing around the Bankex and mid cap expiry with our expert Piyush Bora sir. So जैसा कि I guess this is a small confusion and there are many people joining in for the first time. So जो हमारा morning session होता है that focuses more around stocks and we give intraday conviction delivery idea for 5 days and velocity for 3 months. At the same time, if we have an opportunity, we give you the levels and suggest a trade for derivatives and we take a lot of stock questions. But when it's the case for the afternoon session, it's totally opposite. We focus on the expiry, and if we get time, we take some stock queries. Just give me a second, guys.
Tapasi, the session will be at 2:30 p.m. today. Same place. You don't need to go anywhere. So apparently there is some issue at Shambhu sir's end, so he won't be joining us in the morning session. We'll have our expert Piyush sir join in, and he'll be taking two sessions today. Then the morning session as well as the afternoon session, which we have at 2:30 p.m. So I just had a word with Shambhu sir and Nikon sir. There is some issue at their end. I'm repeating, so that's why we will be having Piyush sir who will be joining us for this session. Meanwhile, if you have any questions, guys, feel free to drop. I can see Electra Green Tech के लिए queries है, Zydus Life के लिए है, Zomato के लिए है, CDSL के लिए है. So if feel free to drop queries like this, we'll be happy to take it up. I can see we have Asian Paints. Apologies for the delay, guys. We will be extending the session by 10 minutes. No need to worry. जब हमारा session start होगा, तब से we will be doing it for 30 minutes. So Marico for intraday, we will definitely take this up. Piyush sir is joining us in a minute. Piyush sir is here. Piyush sir, I have added you to the stage. Please join in. Piyush sir, I have sent you a request. So Piyush sir is here. Good morning, Piyush sir. I hope you can hear me and see me clearly. Piyush sir, you're on mute if you're speaking something. Sir, आप mute पर हैं अभी भी. I hope my voice is audible, Anuj. Yes, sir. You are clearly audible and visible. Thanks a lot for saving the day and joining in between. Thanks a lot for taking up my request. I guess we are all set. You can take a minute, set up everything, and then share the screen and start the session. Fortune Shipyard, IDBI, Pidulite for intraday. I guess I can see questions are coming in, guys. Also, the question would be first come, first serve. Iska question pehle I will be taking that up. If you spam or if you ask again and again, it's not like that. We'll be taking that up first. So we are gonna go step by step. And I guess Piyush sir is already here. So Symphony, what to be done post buyback. We are all set, sir. Waiting for you to share screen and take it up. Yeah, so good morning, Anuj. Good morning, everyone. So we can start the session in 2 minutes. Yeah. Sure, sir. Okay. I'll share my screen. Your screen is visible, sir. Just give me 2 minutes. Yeah. Yeah. Okay. Meanwhile, guys, please feel free to drop your questions in the chat. Prism Johnson, OFSS. We'll take all these query up. And also, guys, finally, it's time for us to start our knowledge series also. We'll update you tomorrow about that. Which session will happen on what date, what topic. We are going to focus starting from zero. We're going to start with candlesticks, technical indicators, chart patterns, then move to option strategy, option chain. Meanwhile, we'll have a session on how to use a RISE application also.
That is also something which we are planning. And I hope my screen is visible, Anuj. Yes, sir. We are good. Yeah, so we are good to go. So good morning, everyone. Welcome to the morning expiry. So today we have mid cap and bank cap expiry. So mid cap from NSE and bank cap from BSE, being the Monday. Sorry for the delay of 10 minutes. So we can extend the session maybe by 10 minutes. Okay. Sure, sir. So starting from Nifty, we have seen Nifty form bearish engulfing pattern on the weekly chart. So last week we have seen some profit booking decline from the higher levels, wherein Nifty corrected almost 300 points on Friday. So Nifty has formed a bearish engulfing, which is a negative bearish candle. So now upside is capped as of now. So on the upside, we have huddle near to 25,200 and 25,333, which is the lifetime high of Nifty. On the downside, we are having a support near to 24,500. So right now, Nifty is hovering near 20 DEMA. So I'll just plot 20 DEMA for you all. So right now, Nifty is trading near to 20 days moving average. So you can see on the chart. So overall trend is mixed as of now. So we have support on the downside of 24,500 and upside is capped at 25,200. So after the 4 weeks, after the winning streak of last 4 weeks, we have seen negative candle on the weekly chart. So which implies that upside is capped as of now. So now the immediate trading band for the Nifty is 24,500 to 25,200. So right now we are in the middle of 25,200 is the immediate hurdle and 24,500 is the support for Nifty. Talking about Bank Nifty is underperforming. So we are just telling from the last 3 weeks that Bank Nifty is underperforming the Nifty. So Nifty is trading near the lifetime high, whereas Bank Nifty is 2,000 points away from the previous lifetime high. So which clearly shows underperformance of the Bank Nifty, mainly led by the HDFC Bank, Axis Bank and ICICI Bank. So Bank Nifty is underperforming and Nifty is outperforming because of all the sectors, namely FMCG, Pharma, IT. So we have seen a clean rally across FMCG, Pharma and IT space in last 2 to 3 months, because of which Nifty has outperformed and banking is underperforming. So Bank Nifty is weak. So it is trading below 20 DEMA, whereas Nifty is trading above 20 DEMA. So which clearly shows Nifty is outperforming और Bank Nifty जो है वो underperform कर रहा है. So last 2 महीने से हम non-stop बोल रहे हैं कि Nifty में ज़्यादा strength है compared to Bank Nifty, क्योंकि जो बैंकिंग के मेन हैवीवेट्स है जिसका वेटेज मोर देन 70% है बैंक निफ्टी में, नेमली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक. सो ये तीनों का सेटअप जो है वो साइडवेज टू नेगेटिव है, उसके वजह से बैंक निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है. स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो हमने आज डोम्स पे वेलोसिटी आइडिया दिया है. सो डोम्स इज लुकिंग गुड फॉर वेलोसिटी आइडिया. स्टॉक ने लास्ट वीकली चार्ट की अगर बात करूं तो इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट दिया ऑन द वीकली चार्ट, विच शोज के जो है मोमेंटम उसमें कंटिन्यू रहेगा. डेली चार्ट पे स्टॉक ने रेंज का ब्रेकआउट दिया है, अभी 2730 के आसपास चल रहा है. सो ये हमारा वेलोसिटी आइडिया है फॉर 1 to 3 मंथ्स. सो नॉर्मली इसमें हम पूरा 15 से 20% का मूव कैप्चर करते हैं. सो वेलोसिटी आइडिया में वी हैव गिवन डोम्स एज अ वेलोसिटी आइडिया टुडे जस्ट फ्यू मिनट्स बैक. सो डोम्स का सेटअप बहुत ही अच्छा है. इसमें 2450 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना चाहिए फॉर 15 to 20% का अपसाइड दिया है. सो डोम्स का जो सेटअप है बहुत अच्छा है. आई रिपीट द लेवल्स. डोम्स जो है वो 2470 के स्टॉप लॉस से वी हैव गिवन बाय फॉर वेलोसिटी आइडियाज फॉर 1 to 3 months and we are expecting it to test 3115 on the upside. So one can definitely buy DOMS for 1 to 3 months. So ये short term delivery play है. So you can pin it, Anuj. DOMS is looking good for 1 to 3 months. Short term delivery के लिए we have given it. बैंक हम ट्रैकिंग अगर अच्छा सेटअप रहेगा तो विल श्योरली इनिशिएट बैंक एंड मिड कैप सेलेक्ट, दोनों में ट्रैक कर रहा हूँ. सो एज ऑफ नाउ कोई सेटअप नहीं है. टिल दैट टाइम वी कैन टेक सम स्टॉक कैरीज. Anuj, sir, any stocks on radar for intraday? For intraday, Asian Paints is looking good. So one can buy Asian Paints for intraday. So Asian Paints में last week भी हमने buy दिया था. So जो crude price है वो last 12 months के low पे चल रहा है. So Asian Paints beneficiary रहेगा. और setup price भी अगर देखें तो stock has given trend line breakout on the daily chart. Weekly पे बहुत टाइम के बाद एक range निकला है और 3100 के ऊपर decisively close दिया है. So overall setup is bullish and one can buy for intraday. अभी 3305 का प्राइस है. So one can buy keeping a stop loss of 3280. 1% का stop loss रहेगा. On the upside we are expecting it to test 3400. So yes, Asian Paints is looking good for intraday. So intraday के लिए अगर किसको buy करना है तो Asian Paints buy कर सकते हैं. और short term delivery के लिए डोम्स हमने ऑलरेडी बोल दिया है. So you can put it Anuj, Asian Paints for intraday and DOMS for 1 to 3 months. So can you repeat the levels? I'm just confirming. Buy at 3305. Stop loss 3270. Keep it 3270 stop loss. Yeah.
Stop loss is 3270. Okay. 3270, yeah. And the target is 3400. Yes, right. Got it, sir. Yeah. And coming back to the queries, I guess we are gonna start with Zydus Life at 1131 swing. Zydus ऊपर के लेवल से अच्छा खासा सेलिंग दिखा है लास्ट 3 वीक में. सो राइट फ्रॉम द हाइज ऑफ 1324 ऊपर के लेवल से हमने ऑलमोस्ट 25% का ड्रॉप देखा स्टॉक में. अभी भी सेटअप वीक ही है. सेटअप एकदम वीक हो गया है. 20 डेमा के नीचे है, 50 के भी नीचे है. वीकली पे लास्ट 5 वीक से लो राइज लो लोस का सेटअप बना रहा है. सो अभी भी इधर से हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा और सेलिंग रहेगा स्टॉक में. इसको 1020 का मेजर सपोर्ट जोन है. अगर 1 से 3 मंथ्स का व्यू है सो इसको 1020 के सपोर्ट से लेना चाहिए. ओवरऑल सेटअप बहुत अच्छा था. नॉन स्टॉप एक अच्छी क्लीन रैली के बाद 60% की अच्छी रैली हुई थी नीचे के लेवल से. उसके बाद अभी स्टॉक लास्ट 3-4 वीक से थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है. बट यस, ओवरऑल सेटअप अच्छा है. अगर शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए 1 से 3 महीने का व्यू है तो 1020 के सपोर्ट से इसको होल्ड करना चाहिए. I guess the पास the Asian Paints की query तो already Asian Paints का setup is good, yeah. Correct. And sir, next is CDSL के बारे में क्या करें sir? What to do about CDSL? ये पूरे ब्रोकिंग जो पूरा पैक था, नेमली CDSL, BSE, Angel One, MCX, इसमें बहुत अच्छा रैली देखा था. लास्ट 3 मंथ्स में हमने देखा है कि एकदम क्लीन रैली था 40 to 50% का अक्रॉस ऑल द स्टॉक्स, नेमली CDSL, MCX, BSE. अब इसमें IEX है वो ज्यादा अच्छा है. अगर CDSL की बात करें तो अभी ऊपर के लेवल से बोनस के बाद स्लोवेंसली नीचे आ रहा है. सो 1600 के लेवल से अभी स्टॉक 1380 के आसपास ट्रेड कर रहा है. अभी भी सेटअप ओवरऑल इतना अच्छा नहीं है, प्रॉमिसिंग नहीं है. थोड़ा और वेट करना चाहिए. जो ब्रेकआउट लेवल था इसका 1300 के आसपास था. सो वेट फॉर सम मोर डिप टुवर्ड्स 1300 वेयर इन योर रिस्क विल बी फेवरेबल. सो 1300 के आसपास इसको बाय करना चाहिए अनुज. एज ऑफ नाउ और थोड़ा वेट करना चाहिए. 1300 का लेवल बहुत अच्छा है इसके लिए. सो 1300 के आसपास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा. सो बाय ऑन डिप्स नियर 1300 1320 वो वेयर इन योर रिस्क विल बी फेवरेबल. और ये पूरे पैक में अभी एक IEX है वो अच्छा लग रहा है. सो ये पूरे पैक में IEX ही है जो चला नहीं था ये पूरे एक्सचेंज रिलेटेड पैक में. सो CDSL, MCX, BSE सब में अच्छा रैली देखा है. अब IEX भी स्लो एंड स्टडी पिकअप कर रहा है. सो ये जो सेटअप वाइज अगर ये पैक में कुछ बाय करना है फॉर 1 मंथ तो IEX पे नजर रखनी चाहिए. सर मारिको फॉर इंट्राडे. मारिको ओवरऑल सेटअप अच्छा है. FMCG पैक पूरा अच्छा है लेकिन एक रेंज में अगर मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ सेटअप जो है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है. सो ये लेवल पे इंट्राडे बाय बन रहा नहीं है. अगर इंट्राडे किसको बाय करना ही है तो 660 के सपोर्ट से बाय करना चाहिए. सर डिक्सन टेक लिया है 13,300 पे 13,300 पे 100 क्वांटिटी. क्या करें आप? डिक्सन वी हैव सीन अ नाइस फॉल फ्रॉम द हायर लेवल. सो लास्ट 2 वीक में हमने देखा है कि ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट 10% स्टॉक करेक्ट हो गया है. ओवरऑल एकदम आउट परफॉर्मेंस था इसमें. सो निफ्टी IT में ये नॉन स्टॉप आउट परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक पे. लेकिन अभी तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं है. थोड़ा और वेट करना चाहिए. सो नीचे में जो सपोर्ट है वो 11,800 के आसपास आ रहा है. सो 11,800 का अच्छा सपोर्ट है वेयर इन योर रिस्क विल बी फेवरेबल. सो वो लेवल के आसपास इसको बाय करना चाहिए. ओवरऑल सेटअप अच्छा है. खाली तरफ से ना एक बीपिंग की साउंड आ रही है. आई लाइक टू रिपीट अनुज के जो भी सब स्टॉक्स है ना सब में सेटअप इज वेरी गुड. लास्ट 3-4 दिन में मार्केट एकदम अच्छा चलने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन है. तो उसके वजह से सब स्टॉक्स में हमने देखा है कि ऊपर के लेवल से 8 से 10% का जो फॉल आया वो दैट इज ओनली प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन. ओवरऑल सेटअप इज वेरी गुड. सो स्टॉक्स 40 से 50% रैली के बाद 10% गिरना इज वेरी नॉर्मल. सो इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए और दिस इज ओनली अ प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन. सो अभी तक सेटअप जो है वो सब स्टॉक्स में इंटैक्ट है टू बाय ओनली. तो डिप्स पे बाय करना अच्छा अपॉर्चुनिटी है. सर पीडियोलाइट फॉर इंट्राडे. हाँ, पीडियोलाइट इज लुकिंग गुड. सो वीकली चार्ट में भी अगर मैं देखूं तो एकदम रेंज लास्ट 2 महीने का रेंज निकला है. सेटअप इज वेरी गुड एंड प्रॉमिसिंग. निफ्टी FMCG जैसे मैंने बताया कि अभी डिफेंस अगर मार्केट में थोड़ा पैनिक है तो डिफेंस, फार्मा एंड FMCG में अच्छा सेटअप रहेगा. सो यस, पीडियोलाइट इज लुकिंग गुड. इंट्राडे में अगर बाय करना है तो 3210 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में जो टारगेट है वो 3320 के होने चाहिए. सो सेटअप इज गुड. इंट्राडे अगर इसको प्ले करना है तो वो 3210 के स्टॉप लॉस से प्ले कर सकते हैं. पीयूष सर आपकी तरफ से ना एक बीपिंग साउंड आ रही है. 1 second. I'll just check. There is some technical glitch. Just wait for 1 minute. Okay, sir. Sure, sir. Guys, we are doing this session in a different situations. Apologies for the inconvenience.
I guess let's go ahead with the question. Sir, Olectra Green Tech लिया हुआ है at 1650. Please suggest. Olectra? Yeah, Olectra Green Tech. Olectra का सेटअप अगर मैं देखूं तो सेटअप इज वीक अनुज. ये जो वीकली मंथली फ्रेम पे लो राइज लो लॉस का सेटअप इंटैक्ट है फ्रॉम लास्ट 4 मंथ. सो सेटअप वीक है. अभी भी रिवर्सल का कोई साइन नहीं है. अभी भी वेट करना चाहिए. नीचे में मेरे को लगता है कि स्टॉक 1420 के आसपास आना चाहिए. वो लेवल पे अच्छा एंट्री रहेगा. सो एज ऑफ नाउ ये लेवल पे एंट्री बनता नहीं है. सेटअप में इतना प्रॉमिसिंग नहीं है. 1480 फर्स्ट लेवल है जो सपोर्ट है. 1480 के आसपास इसको देखना चाहिए. सर सुजलॉन सुजलॉन का सेटअप इज वेरी गुड. सो वी आर कंटिन्यूअसली रिकमेंडिंग. नीचे में 70 का सपोर्ट था इसका. ओवरऑल सेटअप ये वीकली चार्ट की अगर बात करूं तो अच्छे अपमूव के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा है. सो अभी तक सेटअप बहुत बुलिश ही है. हायर लेवल्स पे स्टॉक इज होल्डिंग वेल. सो इसको 70 के सपोर्ट से लेना चाहिए. एंड स्लो एंड स्टडी इसमें मेरे को लगता है 85-90 के लेवल्स आ जाने चाहिए. सो यस, सुजलॉन का सेटअप बहुत ही अच्छा है और हायर लेवल्स पे स्टॉक होल्ड कर रहा है. दैट इज वेरी गुड साइन. सर जोमेटो लास्ट वीक में इसमें हैमर बना था. अगर वीकली चार्ट की बात करूं तो नीचे से अच्छा बाइंग आया था. सो जो लास्ट वीक का लो है दैट इज वेरी क्रूशियल. 240 का लेवल है वो. सो अगर कोई 1 से 2 वीक के लिए देख रहा है तो 240 इज वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर द स्टॉक. और अभी भी सेटअप इज वेरी गुड. हायर लेवल्स पे ये स्टॉक थोड़ा सा और फॉलो अप आएगा अबाउट 262 तो और इसमें 270-275 के लिए अपनू रेडी होना चाहिए. सो यस, इसको 240 का जो लास्ट वीक का लो है वीकली लो दैट इज वेरी क्रूशियल. वो लो से इसको होल्ड रखना चाहिए. The Cochin Shipyard holding 50 for 2250. गोदरेज सीपी? No sir, Cochin Shipyard. कोचिन से बैठो क्या. सो अगर मैं डिफेंस थीम की बात करूं सो वी हैव सीन अ प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन अक्रॉस द डिफेंस थीम. रेल पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स, सीपीएससी इंडेक्स. सो जो ये पैक लास्ट 1 साल पूरा चला था अभी इसमें हमने देखा है कि ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट 30 से 40% का डिप आया है. सो ये पूरा का पूरा जो डिफेंस पैक है जैसे कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, जीआरएससी, जो भी पूरा रेल पीएसयू थीम था, आरवीएनएल, रेलटेल, इवन सीपीएससी इंडेक्स में भेल, एनटीपीसी. सो अक्रॉस जो भी पूरे गवर्नमेंट स्टॉक सरकारी स्टॉक्स थे उसमें वी हैव सीन अ नाइस डाउनफॉल ऑफ 30 to 40% इन लास्ट 2 to 3 मंथ्स. अभी भी सेटअप प्राइस किसमें भी रिवर्सल नहीं है. अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो स्टॉक इज कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग लोअर हाइज लोअर लोस फ्रॉम पास्ट 8 वीक्स. अभी तक सेटअप में कुछ भी चेंज नहीं है. थोड़ा और वेट करना चाहिए. सो 1700 का लेवल है जहां पे थोड़ा सपोर्ट आ सकता है कोचिन शिपयार्ड का. सो एज ऑफ नाउ जस्ट वेट. अभी तक रिवर्सल किसमें भी नहीं हुआ है. सो पूरा जो डिफेंस थीम है, जो रेल पीएसयू का थीम है, डिफेंस है, सीपीएससी, इवन पीएसयू बैंक्स सब टॉप आउट हो गए. सो सब में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअस है. सो अभी जो थीम अच्छा लग रहा है फॉर 1 to 3 वीक्स तो अभी फिलहाल डिफेंसिव प्ले करना चाहिए. दैट इज एफएमसीजी एंड फार्मा. और ये जो डिफेंस थीम है इसमें थोड़ा और वेट करना चाहिए. आपको 10 से 15% नीचे और स्टॉक्स मिल सकते हैं. Sir, Symphony, your view on Symphony? Which stock, Anuj? Symphony. Okay. सिम्फनी का सेटअप इज वेरी गुड. सो रेंज ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर के लेवल्स पे होल्ड कर रहा है. सो ओवरऑल सेटअप इज वेरी बुलिश. जो मेजर सपोर्ट है स्टॉक के लिए वो 1480 का है. सो 1480 के सपोर्ट से इसको होल्ड रखना चाहिए. और अभी आईपीओ आ रहा है अनुज बजाज हाउसिंग का. सो वी हैव सब्सक्राइब्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म. सो वो आईपीओ में भी ध्यान रख सकते हैं. राइट, आज से चालू हो रहा है. सो उसके वजह से बजाज के जो स्टॉक्स है नेमली बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, सब में अच्छा एक्शन रहेगा. सो यस, वो अभी 3 आईपीओ आ रहे हैं. आज फर्स्ट है जो बजाज होल्डिंग्स का है. वी आर रिकमेंडिंग टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म. सो उस पर ध्यान रख सकते हैं. Sir, IDBI at 98. आईडीबीआई अभी एक रेंज ब्रेकडाउन दिया है स्टॉक ने लास्ट फ्राइडे को. सो पूरा जो रेंज था उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है. इधर से भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डाउनसाइड और है अराउंड 82. सो 82 के आसपास अच्छा सपोर्ट जोन है फॉर द स्टॉक. सो एज ऑफ नाउ और वेट एंड वॉच करना चाहिए. जैसे मैंने आपको बोला कि सब स्टॉक्स में ऊपर से हमने देखा है कि 8 से 10% का प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन है लास्ट 2 वीक से, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाइस पे था और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो डिक्लाइन है वो दैट इज गुड फॉर द हेल्दी अपमूव. सो यस, सब स्टॉक्स में ऊपर के लेवल से हमने देखा है कि 10-15% का डाउनफॉल आया है लास्ट 2 वीक में. और अभी जो मेजर ब्रेकआउट लेवल से स्टॉक वो रिटेस्ट कर रहे हैं. सो ओवरऑल सेटअप सब में अच्छा है. बट ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन है. सो नॉट एन इशू. उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए. Sir, IOB bought at 68. 600 shares. और ज्वेलरी स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है अनुज, क्योंकि आईपीओ आ रहा है ज्वेलरी स्टॉक का भी. सो उसके वजह से पीसी ज्वेलर्स, मोती सन, सब ज्वेलरी स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन दिख रहा है आज. आईओबी जैसे मैंने आपको बताया, पीएसयू बैंक सब टॉप आउट हो गए. सो पीएसयू बैंक में एसबीआई, पीएनबी, कैन बैंक सब में जो है ऊपर के लेवल से टॉप आउट का फॉर्मेशन बन गया है. अभी भी स्लो एंड स्टडी सब स्टॉक्स गिर रहे हैं. और यू कैन सी अगर मार्केट की तेजी में निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे भी ये सब स्टॉक्स ऊपर से नीचे थे, होल्ड नहीं कर रहे थे. सो थोड़ा भी पैनिक आएगा तो पहले ये सब स्टॉक्स गिरेंगे. सो आईओबी लेवल्स पर से 54 का अच्छा सपोर्ट है. सो 54 के सपोर्ट से इसको होल्ड रखना चाहिए.
Indigo Paints for intraday. इंडिगो पेंट्स अगर मैं इंट्राडे चार्ट्स की बात करूं तो इंट्राडे के लिए अगर किसको बाय करना है तो वन कैन बाय कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 1470 के सपोर्ट से इसको इंट्राडे ले सकते हैं, ऊपर में 1520 के टारगेट्स के लिए। मैं बैंक एक्स और मिड कैप एक बार देख लूंगा अनुज, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। सो अगर मिड कैप सेलेक्ट का चार्ट देखूं इंट्राडे, सो एज ऑफ नाउ एक रेंज में ही है। सो जो ओपनिंग टिक से अभी एक रेंज में चल रहा है, 13,041 का ओपनिंग था, अभी 13,023 के आसपास है। अगर 10 मिनट का चार्ट देखो तो एक रेंज के अंदर ही चल रहा है, सो नॉट एन आइडियल सिचुएशन फॉर ऑप्शन बाइंग। इवन बैंक एक्स भी एक रेंज में ही है ओपनिंग लेवल्स के बाद। सो ओपनिंग हल्का सा डाउन टिक के बाद बैंक एक्स और मिड कैप सेलेक्ट दोनों कंसोलिडेट कर रहे हैं, सो ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है एज ऑफ नाउ। विल सी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी रहता है तो डेफिनेटली प्ले करेंगे। एज ऑफ नाउ एक रेंज में ही है दोनों। Sir, RVNL 170 quantity at 608. आरबीएनएल भी ऊपर के लेवल से हमने देखा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन हुआ है, लेकिन एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। कंपैरेटिवली स्टॉक में स्ट्रेंथ है कंपैरेटिवली। सो एज ऑफ नाउ अगर लेवल्स की बात करें तो नीचे में 530 का अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। 530 के सपोर्ट से इसको होल्ड रखना चाहिए। Sir, Tata Power 200 quantity at 485. टाटा पावर में ऊपर के लेवल से अच्छा खासा सेलिंग देखा है। सो ये भी सब जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीपीएससी स्टॉक्स है सब, सो टाटा पावर हुआ, भेल हुआ, सब में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन देखा ऊपर के लेवल से। अभी भी ये वीकली चार्ट की बात करूं तो ओवरऑल उतना वीकनेस नहीं है, बट ऊपर के लेवल से स्टडी स्टॉक नीचे आ रहा है, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट भी है नीचे 400 के आसपास। सो 400 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है, हर बार उधर से स्टॉक घुमा है 3 से 4 बार। सो एज पर द सेटअप 400 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो लेवल से उसको होल्ड रखना चाहिए। Sir, view on Reliance Industries, is it going to consolidate here? रिलायंस मेजर सपोर्ट के आसपास ही है, सो इसमें 2850 का अच्छा सपोर्ट है। 2850 के सपोर्ट से इसको होल्ड रखना चाहिए। Sir, your view on NTPC? एक इंट्राडे के लिए वी आर लाइकिंग एसबीआई लाइफ एज वेल। सो ओवरऑल जो इंश्योरेंस स्पेस है उसमें अच्छा एक्शन देखा है। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रू, एसबीआई लाइफ सब में एक अच्छा क्लीन रैली देखा है। वीकली चार्ट पे सबने रेंज ब्रेकआउट के बाद ऑल द स्टॉक्स आर होल्डिंग गेन्स एट हायर जोन्स। सो वी आर लाइकिंग एसबीआई लाइफ फॉर इंट्राडे। सो एसबीआई लाइफ इज लुकिंग गुड। लास्ट जो डे था फ्राइडे को, उसमें मार्केट के डिक्लाइन के बाद भी स्टॉक होल्ड करा था, डोजी कैनल बना था, अब उसका हाई सरपास किया स्टॉक ने। सो एज ऑफ नाउ द प्राइस इज 1920। सो 1900 के स्टॉप लॉसेस को बाय करना चाहिए। ऑन द अपसाइड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू टेस्ट 1950। So for intraday, we are liking SBI Life, one can buy keeping a stop loss of 1900, and for the upside target towards 1950. SBI Life, you can pin it. Got it, sir. Yeah. Sir, your view on Prism Johnson? Which stock? Prism Johnson. Prism Johnson. Okay. Prism Johnson setup is very good. Daily, monthly, weekly सब setup पे स्टॉक बहुत अच्छा है। नीचे में जो सपोर्ट है 165 के आसपास है, सो स्टॉक इज होल्डिंग गेन्स और वॉल्यूम भी सपोर्टिव है। सो 165 का अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, इसको होल्ड रखना चाहिए। Sir, ONGC? ओएनजीसी में थोड़ा वीकनेस है, जैसे मैंने आपको बताया अनुज के सब सीपीएससी इंडेक्स में अक्रॉस सेलिंग है। सो वही भेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी सब में ऊपर के लेवल से हमने देखा है कि अच्छा सेलिंग है और अभी तक कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं है। सो यस, फॉल विल कंटिन्यू। अभी भी सेटअप वाइज थोड़ा सा और इसमें डाउनसाइड दिख रहा है। सो ओएनजीसी अगर मैं बात करूं तो नीचे में 285 का सपोर्ट है, सो ये 285 तक आ जाना चाहिए। एज ऑफ नाउ 299 का प्राइस है। सो आरईसी, पीएफसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी सब सीपीएससी जो पूरा इंडेक्स है उसमें, सीपीएससी इंडेक्स में हमने देखा है कि ब्रेकडाउन हुआ है वीकली चार्ट पे। सो यस, ये सब स्टॉक्स को एज ऑफ नाउ थोड़ा इग्नोर करना चाहिए और नीचे के लेवल्स पे उसको बाय करना चाहिए। Sir, Ward Wizard Innovation and Mobility? Which stock, Anuj? Ward Wizard Innovation. WARD? WAR? D? Onward Tech. No, sir, Ward Vision Innovation. I guess it's not listed here. Your voice is not audible, Anuj. I'm saying Ward Vision Innovation and Mobility Limited. We can take it next time. Sure. Yeah. Sir, Tata Tech.
टाटा टेक सेटअप इज वेरी गुड. सो टाटा स्टॉक्स में लास्ट वीक हमने देखा था अक्रॉस सब स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था, नेमली टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा टेली, टाटा टेक, टाटा इलेक्सी, पूरे के पूरे स्पेस में अच्छा एक्शन था. और ये जो है वो बीटन डाउन स्टॉक है, ऑलरेडी ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है स्टॉक, अभी बेस बना रहा है. सो वीकली चार्ट पे अगर देखो तो स्टॉक है गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ द फॉलिंग चैनल. सेटअप इज वेरी गुड और जो लो रिस्क सेटअप है, सो ऑलरेडी बीटन डाउन स्टॉक है. सो 1048 1050 का अच्छा बेस बनाया स्टॉक ने, वो सपोर्ट से होल्ड रखना चाहिए. थोड़ा सा फॉलो अप और आएगा अबाउट 1115, तो इसमें 10 से 15% का स्विंग दिखना चाहिए. सो यस, टाटा टेक का सेटअप इज वेरी गुड, लो रिस्क सेटअप है, इसको होल्ड रखना चाहिए और इसमें हमको लगता है कि 10 से 15% का अपसाइड दिखना चाहिए. Sir, your view on Rama Steel? Rama Steel? Yes. We have seen a nice up move of almost 50% in the last week. So अगर मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो रामा स्टील ने 50% का अप मूव दिया है लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में. सो उसमें कुछ फंडामेंटल न्यूज भी था और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे स्पर्ट हुए थे लास्ट 3 दिन. सो यस, ओवरऑल अच्छा खासा 50% का अप मूव ऑलरेडी देख लिया है. आज स्टॉक 9% नीचे है, थोड़ा और वेट करना चाहिए इसको. अराउंड 1420 का अच्छा सपोर्ट है, 1420 के आसपास इसको वापस बाय करना चाहिए डिप्स पे. बट यस, सेटअप इज वेरी गुड और लास्ट वीक ऑलरेडी स्टॉक ने रैली कर दिया ऑलमोस्ट 50% का. Sir, a view on BHEL? BHEL is looking weak. So BHEL continuously low rise ही बना रहा है लास्ट 5 वीक से. सेटअप वीक है, अभी भी मेरे को लगता है कि इधर से और थोड़ा डाउनसाइड है इसमें. सो अभी एज ऑफ नाउ वेट करना चाहिए. जो ये इलेक्शन जो डे का रिजल्ट का लो था वो 223 का है, वो बहुत क्रूशियल है स्टॉक के लिए. वो फ्री क्लो था, अभी भी 263 के आसपास है. इमीडिएट में जो सपोर्ट है वो 250 के आसपास है और 250 के नीचे 225 का लेवल है. तो एज ऑफ नाउ 250 इज द सपोर्ट फॉर द स्टॉक. ऑलरेडी ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हो गया स्टॉक. सो 335 वाला अभी 265 के आसपास चल रहा है. तो ये पूरा जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीएसई जो पूरा स्पेस है उसमें सेलिंग है. सो थोड़ा भी जो पुल बैक आ रहा है उसको पीपल आर यूजिंग इट फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ओनली. सो एज ऑफ नाउ इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए. 250 के सपोर्ट से देखना चाहिए. Sir, a view on Man Aluminium? Which one? Man Aluminium. Okay. MAN Aluminium. Yeah. So मान ओवरऑल सेटअप तो वीकनेस ही है. अभी डेली चार्ट की अगर बात करूं तो अभी तक सेटअप इज नॉट दैट ग्रेट, लेकिन नीचे में सपोर्ट बहुत अच्छा इंटैक्ट है 120 के आसपास. सो यस, 120 के सपोर्ट से इसको होल्ड रखना चाहिए. Radhika Jewelers? ग्रासिम? Radhika Jewelers. ओके, राधिका ज्वेलर्स. यस, तो स्टॉक में नया आज लाइफ टाइम में बना है. जैसे मैंने आपको बताया अनुज कि वो एक ज्वेलर स्टॉक का भी आईपीओ आ रहा है. सो गार्डगिल का, इसके वजह से ऑल द स्टॉक्स आर विटनेसिंग फ्रेश बाइंग. सो मोती सन ज्वेलर्स है, राधिका ज्वेलर्स है, पीसी ज्वेलर्स है, ऑल द ज्वेलरी के पूरे स्पेस में अच्छा एक्शन है. लास्ट वीक से दिख रहा है एक्शन बिकॉज ऑफ द आईपीओ, अपकमिंग आईपीओ. सो यस, सेटअप इज वेरी बुलिश. स्टॉक में आज नया लाइफ टाइम में बना है और वॉल्यूम्स भी बहुत सपोर्टिव है. ऊपर में मेरे को लगता है कि ये 140 के लेवल आ जाने चाहिए स्लो एंड स्टडी. सो यस, फॉर 10 to 15% ये स्टॉक में बहुत अच्छा सेटअप है और नीचे में 115 का अच्छा सपोर्ट है. सो 115 के सपोर्ट से इसको होल्ड रखना चाहिए फॉर 135 140 लेवल्स. Sir, please advise about SBI. Is it a good time to buy or should I wait for price to go down more? Which stock? SBI. Okay, one second. ये देखो सेंको गोल्ड भी वही है. तो ये पूरा का पूरा जो गोल्ड का थीम है वही चल रहा है ज्वेलर स्टॉक्स का. सेंको गोल्ड, मोती सन ज्वेलर्स, राधिका ज्वेलर्स, क्योंकि आईपीओ आ रहा है उसके वजह से सब स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है. एसबीआई बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस में. स्लो एंड स्टडी देखो रेंज का ब्रेकडाउन दिया है स्टॉक ने. तो इधर से भी मेरे को लगता है कि 760 के लेवल आ जाने चाहिए. 760 के आसपास अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा. बट यस, सेटअप वाइज पूरे के पूरे सीपीएसई इंडेक्स, पीएसयू बैंक सब में सेलिंग है. We'll take 2 more questions. Yeah. Persistent. I'll check Nifty mid cap and bank caps again अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो. बट नो, एक रेंज में ही है. सो नॉट एन आइडियल सिचुएशन फॉर ऑप्शन बाइंग. एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है बैंक कैप्स एंड मिड कैप बोथ. Persistent, the setup is very good. So IT स्पेस में ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है. स्लो एंड स्टडी सेटअप लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है. सो Persistent को होल्ड ही रखना चाहिए एज ऑफ नाउ 5000 के सपोर्ट से एंड सेटअप इज गुड. And sir, your view on IRFC? IRFC में ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया. सो मेजर ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया स्टॉक ने. रेल पीएसयू में अक्रॉस सेलिंग है, जैसे मैंने आपको बताया पहले. रेल पीएसयू, सीपीएसई इंडेक्स, ये सब स्टॉक्स में सेलिंग है. बट यस, ये लेवल पे रिस्क और इज वेरी फेवरेबल बिकॉज द स्टॉक हैज जस्ट रिटेस्टेड द ब्रेकआउट जोन. सो 162 का अच्छा सपोर्ट है इसमें. अभी 167 के आसपास है. सो 162 के सपोर्ट से इसको होल्ड रखना चाहिए. लो रिस्क सेटअप है, इसको प्ले करना है तो 162 के सपोर्ट से प्ले कर सकते हैं. ऑलरेडी अच्छा खासा ऊपर से करेक्शन आ गया है और मेजर लेवल को रिटेस्ट किया स्टॉक ने. So guys, we have initiated 3 intraday trades for the day. All trades are active. We will update you in the afternoon session and trading again with Piyush sir.
Thanks a lot to you sir, for joining in on such short notice and selling the day. Thank you everyone. Thank you, everyone. Thank you, Anuj. Yeah. For the pancakes and mid-cap expiry. Tapasji, you can check the pin messages for the trades that we have initiated for